हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सपना ऑन स्क्रीन यूट्यूब चैनल. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों. 1.1 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर poems English workshop. Today we are going to write it. It is from your class 10th Kumar Bharti textbook. So first question is lines from the poem as a proof. Tagore wishes for a nation where people are truthful. So कविता की lines है where words come out from the depth of truth. B. Everyone working hard to reach perfection, where tireless striving stretches its arms towards perfection. C है everyone holding their head high in dignity. इस अर्थ की लाइन्स है where the mind is without fear and the head is held high. D. Knowledge should be free at all, where knowledge is free. E. The poem is a prayer. Into that heaven of freedom, my father led my country awake. क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द कॉलम्स केयरफुली एंड मैच द एक्सप्रेशन विद देयर मीनिंग. दोस्तों, अगर आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. मेरा नाम है सपना टीचर और मैं पुणे ज़िले से हूँ. आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा. क्वेश्चन 2 है रीड द कॉलम केयरफुली एंड मैच द एक्सप्रेशंस. तो इसके लिए है पहला द हेड इज़ हेल्ड हाई. इसके लिए एक्सप्रेशन है अ पर्सन विथ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड एंड पजेसिंग इट. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, narrow mindedness. Knowledge is free, education is given to all. Depth of truth, sincerity of heart stretches its arms. मतलब है mind is without fear, a fearless person. Stretches its arms मतलब है aim at perfection. Clear stream of reason, clear thinking. Dead habits, dried up infertile land of stands. Ever widening thought and action, broadening the outlook and attitude. क्वेश्चन 3 है क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओन वर्ड्स, आपके शब्दों में लिखने उत्तर. हाउ इज द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स. द वर्ल्ड इज ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स which represent divisions based on religion, caste, creed and race. We explain what the tireless striving should be for. Answer. Tireless striving should be for achieving perfection in every field and for the overall progress of the nation. See, where words come out from the depth of truth, explain. This means people should be deeply honest and sincere. Their words should reflect their inner truth rather than superficiality or lies. D. Who is thee and what is the appeal? Thee refers to God at the Almighty. The poet appeals to him to lead the countrymen towards ever widening thought and action and to let the country awake in a heaven of freedom. What qualities does the poet wish to inculcate? The poet wishes to inculcate fearless dignity, truthfulness, logical thinking and hard-working attitude towards perfection. Question 3b, responses and justifications. A. Is the poem a prayer for India alone? इसका उत्तर है no. While written during India's struggle for independence, the values of freedom, truth and reason are universal and apply to any nation seeking true liberty. B. What should the words we speak reflect? Our words should reflect our sincerity, honesty and the depth of truth from our hearts. C. What should people keep on widening? How? People should widen their thoughts and actions. This can be done by letting go of narrow prejudices and embracing a broad logical outlook. D. From what darkness of night should our nation awake? Answer. The nation should awake from the darkness of ignorance, narrow-mindedness and the dead habits of old superstitions. E. What attributes of Rabindranath Tagore does the poem reflect? It reflects his deep patriotism, his humanist outlook, his belief in a unified world and his spiritual faith. F. What effect does the repetition of where have? The repetition of where creates a rhythmic prayer like flow and emphasizes each specific condition necessary to build the poet's heaven of. Question 4 है read the poem carefully and complete the table after discussion in pairs. One is done for you. So concept है mind, present situation है mind is full of fear और expected situation है fearless mind होना चाहिए.
तो हेड कैसे देखिए, हेड इज बोड डाउन है प्रेजेंट में, और हेड हेल्ड हाई विथ डिग्निटी रहना चाहिए। नॉलेज रिस्ट्रिक्टेड है, कैसे होना चाहिए, नॉलेज फ्री होना चाहिए। वर्ड्स कैसे है, इनसिंसियर और मीनिंगलेस है, तो वो कम फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रूथ रहने चाहिए। हैबिट डेड हैबिट्स है, तो उसे गाइडेड बाय द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। और थॉट ऑफ एक्शन क्या है, स्टैग्नेंट और बाउंड बाय ओल्ड कस्टम, तो उन्हें एवर वाइडनिंग एंड प्रोग्रेसिव होना चाहिए। क्वेश्चन 5 है सेंटेंस कंप्लीशन। ए, when the mind is without fear and the head unbored, we enjoy self respect and dignity। आंसर है when knowledge is free, every citizen enjoys the right to education and information। See, we can prevent caste, class, religion, etc. injustice when we pull down discriminatory walls of narrow-mindedness and prejudice। D, constant effort and strife leads to perfection। E, logical thinking and reasoning can put a stop to blind beliefs, superstitions, and dead habits। Tagore appeals to God to make his country a haven of freedom। Question B, fill in the blanks। Students should keep themselves aloof from old harmful traditions। Answer, when knowledge is free, everyone will be literate। C, it is a social duty of every student of the modern world to uproot superstitions believed from societies। D, students must develop broad-minded outlook and attitudes। 6, example of metaphor from the poem। So metaphor क्या है, देखिए metaphor is an implicit comparison between two unlike things। दो ऐसी चीजें उनमें जो तुलना होती है कि एग्जाम्पल देखिए, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, मतलब रीजन इज कंपेयर टू क्लियर flowing stream that is not blocked by obstacles। Dreadly desert stands of a dead habits, old senseless habit and customs are compared to a dry barren desert। मतलब जो पुरानी सोच है, हमारी आदतें हैं, उन्हें किससे कंपेयर किया गया है, उसे बैरन लैंड मतलब डेजर्ट से कंपेयर किया गया है। तो इस तरीके से दो अलग चीज़ों का एक साथ तुलना करना, इसे मेटाफर कहते हैं। कंपोजिशन आइडल स्कूल, तो हमें आइडल स्कूल के बारे में यहाँ पे कंपोजिशन लिखना है। Where the mind is eager and the heart is light, where the knowledge flows like a river inside, where every child's talent is nurtured with care, where the scent of curiosity fill the air, where the failures are real lessons and successes are shared, where every young dreamer is truly prepared। अभी हमें appreciation of the poem लिखना है। poem है where the mind is without fear, is a masterpiece by noble literate poet है रविन्द्रनाथ टैगोर। राइम स्कीम यहाँ पे है, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स है, तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स नहीं है, सो स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है। और थीम क्या है, इट सेंटर्स ऑन द पोएट्स विजन ऑफ अ ट्रूली फ्री इंडिया, नॉट जस्ट पॉलिटिकली बट इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली। फेवरेट लाइन क्या है, वेयर द माइंड इज लेड forwarded so forward by the into ever widening thought and action and it emphasizes progress। यहाँ पे figure of speech है, the poem uses several figures of speech, most notably metaphor यहाँ clear stream of reason and the personification यहाँ पे क्या stretches art towards the perfection। theme central idea है, its special features include its solemn tone and the repeated use of fair to build an idealistic image of nation। I like this poem because it serves as a timeless anthem for human dignity and global unity। Question 9, imagine that you have a deliver a speech on the occasion of Independence Day or the Republic Day in the school assembly, prepared a speech to deliver on India of my dreams। तो यहाँ पे टॉपिक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हमारे सपनों का भारत। तो इसके लिए भी पॉइंट्स दिए गए, इस आधार पे हमें वो स्पीच लिखना है। तो हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, शुरुआत करनी है, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सपना एंड टुडे एज वी सेलिब्रेट तो इंडिपेंडेंस डे लिखिए या फिर रिपब्लिक डे लिखिए। आई एम ऑनर टू शेयर माई विजन फॉर द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। My dream India is a nation where, as Tagore said, the head is held high. With pride, I envision an India where quality education is free for every child, regardless of their background. It is a place where technology and tradition walk hand in hand and where women feel safe and empowered at any hour. I dream of an India that is free from the narrow domestic walls of caste and creed, thriving instead on the strength of its diversity.
to achieve it. We must all do our part. Let us pledge to be the change we wish to see. Thank you for listening. जय हिंद. सो इस तरीके से हमने हमारे सारे प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर लिखे हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.